children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about numbers from 51 to 100. So let's start with that. Say the number as you write, okay? So these are the pictures of some grapes. So how many are they? 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 tens and 1 1. So 5 tens, 1 1 makes number 51. So how to write 51? F-I-F-T-Y 50 and O-N-E 1. So write it 51 like that here, 51. Similarly, 5 tens plus 2 ones makes number 52. So write it 52 over here. Then उसके बाद आता है 53, then 54. 5 tens plus 5 ones makes number 55, then 56, 57, then 58, 59, 60 and so on. Okay beta? So these are the others number. You have to fill it by your own. Okay? This is very easy. Okay? Just read and fill the correct number in the boxes. So now next topic is testing time 8.1. राइट द नंबर्स इन ऑर्डर इन द नंबर ग्रिड. अब ये कुछ नंबर ग्रिड है, इसमें करेक्टली आपको नंबर्स लिखने हैं. लाइक 1 के बाद में क्या आता है हमारा 2. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. देन आफ्टर 2 राइट इट 3, देन 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 आता है, देन 7, देन 8, देन 9. 9 के बाद 10, 11, 12 and till 100 you have to fill it by your own beta. Okay? Now move on next. Count backwards and write the number. अब आपको backward counting करनी है. Like 100. 100 से पहले क्या आता है? Yes, you're right. 99. So write it 99. Then 98. 97. Then 96. 96 से पहले 95. फिर उसके बाद उससे पहले 94, देन 93, उससे पहले 92 और उससे पहले आता है 91. Yes, this is how you have to fill the other blanks. Okay? I hope you understood. So now move on next one. Counting by grouping. So here it is blocks 1, 2, 3, 4, 5 and 5, 5 for 5, 10 and again 10. So 10 plus 10 makes number 2 tens and here it is 2 loose, so 2 tens plus 2 ones makes number 22 like that. I hope you understood. Now testing time 8.2. Count the number of objects by grouping in tens. अब आपको देखने हैं कि 10 के कितने ग्रुप हैं. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ तक हमारा एक ग्रुप बन गया. उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक भी हमारा बन गया. सो 10 और 10 मतलब कि हमारे पास हो गए बच्चों 2 tens. लूज कितने बच्चे हमारे पास 1 2 3 4. सो राइट इट 4. सो 2 tens plus 4 ones makes number 24 like that. Similarly ये हमारे triangles के shapes हैं. Just count well and fill the other blanks yourselves like that way. Okay? So now move on next one, which is write the numerals. So first one is given 25. So write it 25 here very nicely like that. 2 5 25. 73. So 7 or 3 makes number 73. Then 87. So write it 87. 91. So write it 91. So this is the other examples. You have to fill it your own beta. So now move on C part. Write the number names. अब numbers के नाम लिखने हैं आपको. First one is given 74. Okay. So write it 74. S E V E N T Y. This is 70 and 4 F O-U-R. 74. Okay. So second है 65. So write it 65 like that. S-I-X 60 and then 5.
So this is how we have to write the other one too. Okay. So now move on next. Before, after and between. एक बच्चा है, इसका नाम रोहन है, देन सीमा है, देन राधा है. So Radha is before Seema. Yes, Radha is after Seema and Seema is between Radha and Rohan, like that. Okay. So in numbers 15, 16, 17. So हमने क्या करना है? 15 is before 16. 15 हमारा 16 से पहले आता है. Like that. Then 17 is after 16. 17 हमारा कब आता है? 16 के बाद में. Like that. And 16 is between 15 and 17. और 16 नंबर हमारा कब आता है? 15 और 17 के बीच में लाई करता है. So this is the concept of before, after and between number. Using the number strips to write numbers. अब क्या करना है? इस strips के थ्रू हमने देखना है which one is before and after and between. Suppose you are at 10. So 10 से पहले जो नंबर आता है this is called before. 10 के बाद का नंबर this is called after number. और एग्जैक्ट जो हमारा जो 10 है वो हमारा बिफोर और आफ्टर मतलब कि इन दोनों के बीच में लाई करता है. क्या? 9 और 11 के बीच में हमारा 10 लाइज करता है. आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन बेटा. टेस्टिंग टाइम 8.3. राइट द नंबर विच कम्स बिफोर. ओके. सो 26 से पहले क्या आता है? सो 26 से पहले आता है 25. 47 से पहले yes 46. Similarly 58 से पहले yes 57. Okay. So these the other example. You have to fill it your own beta. So now B part. Write the number which comes after. So 24 के बाद में 25. 65 66. 84 के बाद में 85. 95 के बाद में 96. Okay, so this is very easy. Just do practice. Now C part. Write the number which comes in between. बीच में कौन सा आता है? So here it is given 22, 24. So 22, 24 के बीच में लाई करता है 23 number. So write it 23 over here. Similarly 62, 64 इन दोनों के बीच में आता है 63. Like that. 45, 47, then उससे पहले 46. So this is how we just do before, after and between number. Now D part. Filling the correct numerals in the boxes. Okay. First one is dash is just after 58. 58 के just बाद में क्या आता है बच्चों? Yes 59. So write it 59. Similarly dash is just before 64. 64 से just पहले क्या आता है हमारा? 63. Yes. And dash is between 85, 87. 85 और 87 के बीच में हमारा आता है 86. So these are the other blanks. You have to fill it your own beta. This is very easy concept. I hope you understood well. With this, we ended the chapter. Do rest of these exercise by your own.